हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीसी मोटर का पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ज़रूर देखें। ये डीसी मोटर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए 11 क्वेश्चन। नाउ ए डेज डीसी मोटर इज वाइडली यूज्ड इन। देखिए नाउ ए डेज डीसी मोटर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसक्शंस, एयर कंप्रेसर्स, सेंट्रीफ्यूगल्स, पंप, मशीन। सो देखिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग डीसी मोटर का यूज करते हैं। एक्सप्रेशन इसका देख लीजिए। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस, ये डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड इन ट्रैक्शंस एप्लीकेशंस ड्यू टू देयर एक्सीलेंट स्टार्टिंग टॉर्क प्रॉपर्टीज। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर्स करंट रिजल्टिंग इन हाई स्टार्टिंग टॉर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which DC motor has the least percentage increase in input current for the same percentage increase in torque? Which DC motor has the least percentage increase in input current for the same percentage increase in torque? Separately excited motor, दूसरा में सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंपाउंड मोटर्स। देखिए एक्सप्रेशन में, नहीं सॉरी, सीरीज मोटर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरीज मोटर्स। देखिए कैसे। इन डीसी सीरीज मोटर्स बोथ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैरी द सेम करंट फ्रॉम द सोर्स एज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। देयरफॉर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग्स। फॉर ए गिवन source current is torque produced is a square of this current, so even there is low current change, the torque change is great. चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। By looking at which particular part of the motors we can identify a DC motor? Shaft, field winding, commutators, armatures winding। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 commutators। देखिए कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन आर्मेचर्स इनटू द यूनिडायरेक्शनल करंट। इट इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर, सो द कम्यूटेटर कलेक्ट्स इंड्यूस ईएमएफ और करंट डेवलप इन द आर्मेचर्स। इन द डीसी मोटर द कम्यूटेटर इज यूज्ड टू अल्टरनेट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द डीसी करंट। फॉर एसी मोटर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली alternated by the natures of the AC current. The 14th question. The counter EMF of the DC motor is less than applied voltage, more than applied voltage, equal to the applied voltage, none of the above. इसका right answer होगा less than the applied voltage. Less than the applied voltage. देखिए कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू द डीसी मोटर इक्वेशंस आई इक्वल का क्या होता है? V माइनस ई वी बाई आर ए। वी बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर डेट द बैक एम एफ इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। इफ द बैक एम एफ ऑफ डीसी मोटर हार्नेसेस देन, देखिए इफ द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर vanishes then the motor continue to run, motor will stop, armature will burn, या the motor continues to run in slow speed। if the back EMF of DC motor vanishes यदि हो जाएगा इलेक्ट्रिक डीसी मोटर तो क्या होगा? आर्मेचर विल बर्न। आर्मेचर में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। देखिए explanations. The presence of back EMF makes the DC motor is a self-regulating machine, that is, it makes the motor to draw a much armature current as the just sufficient to develop the torque required by load। armature current बराबर क्या था? IA बराबर V minus EB by RA। When the motor is running on no load, a small torque is required to overcome the frictions and windage losses। if EV is zero, the armature current will increase to a very high value, therefore a large amount of heat will be produced which may burn the armature's winding। Why is the speed of DC shunt motor dependent on back EMF?
because flux is proportional to the armature's current, because armature drop is negligible, because back EMF is equal to the armature current, because flux is constant in DC shunt motor. Why is the speed of DC shunt motor dependent on back EMF? क्योंकि because flux is constant in DC shunt motor. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, because the flux is constant in DC shunt motor. In the case of DC motors, a speed directly proportional to the back EMF by flux. The field winding is connected across the armatures. The resistance offered by the field is constant, so the current is constant. As current is constant, flux also becomes constant. B. The causes flux is directly proportional to the current. Therefore, the speed of the DC shunt motor depends on the back EMF. What will happen when the field of a DC shunt motor gets on while the motor is running? Continue to run at the same speed. The speed of motor will be reduced. The motor will attain dangerous high speeds. Armature currents will be reduced. इसका आंसर क्या होगा 3. The motor will attain dangerous so high speeds. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन. The motor, हाँ ठीक है. In a DC shunt motor, if we cut the supply for the field winding, the speed would dangerously increase in order to maintain the back EMF of the motor. In the case of DC motor, a speed directly proportional to the back EMF by flux. So if flux drops to 0, there theoretically a speed will tend to infinity and practically it will damage the windings of the motor. चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर. Which of the following DC motor have the tendency of load instability? Cumulative, compound motor, shunt motor, series motor, differentially compound motor. इसे क्या होगा डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर. In a differentially compound motor, because of the oppositions of the series field to the shunt field, the flux increase as the load and armature current increase. As we know that the decrease in flux causes an increase in the speed. However, because of the speed is proportional to the EB by flux, if both factors vary in the same proportions, the speed will retain constant. This section occurs in the differential compound motor. If more turns are needed to series coils, it is possible to cause the motor to run faster as the load is increased. देखिए शंट मोटर पावर सप्लाई वाला सीरीज में है. चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर. The reason for using a starter while a starting of DC motor is increased. To restrict armature current as there is no back EMF at the starting, a motor not self-starting, restrict a starting torque, none of the above. इसका राइट आंसर क्या होगा? टू रिस्ट्रिक्ट आर्मेचर करंट एज द नो बैक ईएमएफ एट स्टार्टिंग. द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर इज फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ साइकिल, लो स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क या वेरिएबल स्पीड. इसका राइट आंसर क्या होगा? लो स्टार्टिंग टॉर्क. देखिए इन द डिफरेंशियल कंपाउंड्स मोटर टू फील्ड वाइंडिंग दैट इज shunt and series windings oppose each other. This causes a reduction in flux and consequence a decrease in torque. According to Fleming's left hand rule, if the forefinger points in the direction of the field, then the middle finger will point in the direction of current in the conductor. ये होगा. देख लेते हैं. Current in the conductor. When a current carrying conductor such as wire attached to the circuit moves placed in a magnetic field, electric current is induced in the wire due to Faraday's law of induction. The right hand is held when the thumb, first fingers and second finger mutually perpendicular to each other. Then the thumb is pointed to in the direction of the motions of the conductor related to the magnetic field direction of the force. Forefinger is pointed in the directions of the magnetic field. Middle finger represents the direction of the induced generated current within the conductor. Which DC motor is preferred for elevators?
एलिवेटर के लिए कौन सा हम लोग मोटर का डीसी मोटर का यूज करते हैं? कम्यूटेटिव compound motors. Commutative compound motor finds applications where high starting torque and pulsating loads are required. In the elevators, the load is always pulsating and high starting torque is required to run the elevators. This high starting torque is provided by the series winding of the compound motors, and maximum speed at no load is limited by shunt windings of the compound motor. Which of the following applications required high starting torque? Air blowers, elevators, locomotive, centrifugal locomotive होगा इसका राइट आंसर क्या है? लोकोमोटिव. To start up the locomotive, we required very high starting torque. DC series motor is used as starting torque is about 500%. Which DC motor is preferred for constant speed? Compound motor, series motor, shunt motor, differential motor. Shunt motor इसका 3 आंसर होगा इसका shunt motor. In the case of DC motor, speed active proportional to back EMF by flux. The field winding in shunt motor is connected in parallel armatures winding and supply. The field winding is connected across the armatures. The resistance offered by the field is constant, so the current is constant. As a current is constant, flux also constant because the flux is directly proportional to the current. Since flux is constant, so the speed is also constant because the speed depends on flux. Hence, the speed of the shunt motor can be assumed almost constant under normal running conditions. The direction of rotations of DC series motors can be changed by interchanging field international, interchanging supply terminals both A and B. पहला होगा इसका राइट आंसर, पहला होगा interchanging field terminal. Interchanging field terminals. If the field winding is reserved, then the current flow through the field winding reserved, so the effective flux will be reversed. We know that torque is proportional to the flux. As we reversal of the flux from positive, it becomes negative, so torque generated also becomes negative, resulting motor rotating in reverse directions. Note, reverse the motor, we need to change the polarity of the supply voltage to either be the field windings of the armatures, but no both. दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कृपया आप लोग हमारे नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.